Assalamu alaikum. The topic of this lecture is transformer coupled class A power amplifiers. This is the second type of class A amplifiers. In this we couple output, or you can say output resistor or output load, through a transformer. A transformer coupled class A amplifier uses a transformer to couple the output signal to the load. It have maximum efficiency of 50%. तो अगर इसका हम कंपैरिजन करें सीरीज फेड क्लास ए एम्पलीफायर से, तो सीरीज फेड के केस में हमारे पास जो मैक्सिमम एफिशिएंसी थी दैट वाज 25%, बट हेयर वी कैन increase efficiency by using transformer to couple output signal to the load, and that can be increased up to maximum 50%. A transformer can step up or step down a voltage or current applied to one side. This we all know why we use transformer actually in practical circuits. The voltage transformation is given by this equation, which is equation 12.9. That is relation or ratio of output voltage over input voltage is equal to the winding of the secondary side or the output side to the number of windings or turns at primary side. So this means V2 over V1 is equal to N2 over N1, where V2 is the voltage at output side, or you can say at secondary side, and V1 is the voltage at the primary side of transformer. And the current transformation is given by I2 over I1 is equal to N1 over N2. Actually this is inverse of voltage relation, since this is I2 by I1. So in case of current, it is actually N1 over N2. N is the number of turns at N1 is the number of turns at primary side, and N2 is the number of turns at secondary side of transformer. Since the voltage and current can be changed by transformer, an impedance seen from either side, either primary or secondary, can also be changed. Means अगर आपके पास कोई लोड रजिस्टर है, लेट से जिस तरह इस फिगर में शो किया गया कि लोड रजिस्टर कनेक्टेड है सेकेंडरी साइड पे, तो ये लोड रजिस्टर जिसकी वैल्यू RL है वो प्राइमरी साइड पे किस वैल्यू के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है. वी कैन कैलकुलेट दिस. सो इसको हमने मार्क किया है एज RL प्राइम. The impedance RL is connected across the transformer secondary, as we have said about this diagram. This impedance is changed by transformer when viewed at primary side, and we name it as RL prime. तो अगर आप ये RL prime find करना चाहें, तो you have this relation. Actually this is ratio of output impedance over input impedance, input at input side of transformer and output side of transformer. तो ये रिलेशन है RL ओवर RL प्राइम इज इक्वल टू, इसको सिमिलर नेम है R2 बाय R1, दैट इज इक्वल टू V2 बाय I2 डिवाइडेड बाय I1 V1 ओ बाय I1. सो इसको अगर आप रीअरेंज करें, this will be equal to V2 into I1 over V1 into I2. And since we know that V2 by V1 is equal to N2 by N1, V2 by V1 is equal to N2 by N1, equation 12.9 suggests that, and N2 by N1 actually N2 by N1 is actually I1 by I2. So we replace this I1 by I2 with N2 by
N1. So we can rewrite these terms as N2 by N1 whole square. तो इसको एक नाम अगर हम दे दें विच इज ट्रांसफार्मर टर्न रेशो and we name it as A is equal to N1 by N2, where A is the turn ratio of the transformer. The above equation becomes RL prime over RL is equal to R1 over R2. इसका reciprocal लिया है equal to N1 over N2, that is equal to A square. So आप आर एल प्राइम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं इफ यू नो द टर्न रेशियो एंड इफ यू नो द वैल्यू ऑफ लोड रजिस्टर. तो आर एल प्राइम की ये इक्वेशन है हमारे पास, आर एल प्राइम इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू आर एल. दैट मीन्स आप प्राइमरी साइड पे जो ये लोड रजिस्टर आर एल जिस वैल्यू से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यू कैन कैलकुलेट दैट with the help of this equation 12.12. ये एग्जांपल है, एग्जांपल 12.3. It says what transformer turn ratio is required to match a 16 ohm speaker load so that the effective load resistance seen at primary is 10 kilo ohm. मीन्स आर एल की वैल्यू गिवन है 16 ओम और आर एल प्राइम गिवन है 10 किलो ओम. You need to find the transformer turn ratio. So N1 by N2 whole square or A whole square is equal to RL prime over RL. RL prime is given as 10 kilo ohm, RL given as 16 ohm. So this turn ratio is actually 625. इसका स्क्वायर एक्चुअली. और ये टर्न रेशो अगर हम सिर्फ फाइंड करना चाहें तो स्क्वायर रूट 625 का हम लेंगे तो दैट विल बिकम 25. सो द रेशो इज 25:1. Now we are going to discuss the operation of amplifier stage. तो अगर आप एम्पलीफायर जो कि ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर है इसकी ये डायग्राम देखें. सो वी हैव ए फिक्स बायस नेटवर्क, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आर सी कनेक्टेड होता है आर सी रेजिस्टेंस, वहाँ पे हमारे पास ट्रांसफार्मर है. मीन्स ट्रांसफार्मर के थ्रू हम जो यहाँ पे वोल्टेज है वी सी उसको हम कपल करते हैं आउटपुट रजिस्टर के साथ और या लोड के साथ विच इज़ आर एल. तो इसका हमने इसकी जो एम्प्लीफिकेशन एम्पलीफायर की का जो ऑपरेशन है वो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वी एक्चुअली नीड टू डू इट्स डीसी एनालिसिस. तो इसके हमारे पास डीसी लोड लाइन अगर आप प्लॉट करना चाहें तो द ट्रांसफार्मर डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस डिटरमिन द डीसी लोड लाइन फॉर द सर्किट. इसका क्या मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी टर्न रेशो है ये आपके पास यहाँ पे आर सी के को रिप्लेस कर रही है इन जनरल फिक्स बायस नेटवर्क. तो ये डिटरमिन करती है रेजिस्टेंस एट द ट्रांसफार्मर एट द कलेक्टर टर्मिनल ऑफ द collector terminal of the power transistor. Typically, this DC resistance is small, ideally 0 ohm, and there is no DC voltage drop across 0 ohm DC load resistance. Why we call here the resistance equal to 0? Because ये आपके पास वाइंडिंग है तो आइडियली इसकी रेजिस्टेंस 0 है. सो यहाँ पे हम आर सी को 0 कंसिडर करते हैं. ठीक है, मीन्स इंस्टेड ऑफ आर सी रेजिस्टेंस वी हैव हियर नो रेजिस्टेंस और द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर
So the load line is drawn straight vertically from the voltage point VCEQ equal to VCC. So if you see the output characteristic curve of this ट्रांजिस्टर विच इज पावर ट्रांजिस्टर, तो इसमें देखें इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे हम डीसी लोड लाइन प्लॉट करते हैं। तो इस सर्किट की जो नेटवर्क इक्वेशन है वो हमारे पास है VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC, और RC को आप अगर ज़ीरो कंसिडर करें, कंसिडरिंग कि ये जो RC है वो रिप्लेस हो रही है विद द प्राइमरी कॉइल ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। तो RC को ज़ीरो कंसिडर करें तो आपके पास VCE इज इक्वल टू VCC, ये इक्वेशन या ये रिलेशन बन जाती है। सो VCE इज इक्वल टू VCC इज द पॉइंट हेयर, और RC ज़ीरो की वजह से यू कैन ड्रॉ द स्ट्रेट वर्टिकल लाइन at this point, and at the point where it intersect the IBQ curve, इनमें से कोई भी IBQ हो सकता है, जिस पॉइंट पे ये IBQ की कर्व को कट करेगी ये DC लोड लाइन, that will be our Q point। तो इस एग्जांपल में हमने ये ज्यूम किया कि आपके पास IBQ की वैल्यू है 6 मिली एम्पेयर। तो ये जो डीसी लोड लाइन है 6 मिली एम्पेयर वाली कर्व को, जो कि ये कर्व है, इसको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है दैट इज आवर ऑपरेटिंग पॉइंट, और दैट इज आवर क्यू पॉइंट। नाउ द क्यूसेंट पॉइंट, it means that the DC bias point set the condition for the maximum undistorted signal swing for both collector current and collector emitter voltage. If the input signal produces a voltage swing less than the maximum possible range, the efficiency of the circuit at that time will be less than the maximum of 50%. इसका क्या मतलब है कि अगर ये जो DC ऑपरेटिंग पॉइंट है एक्चुअली ये डिटरमिन करता है कि आपके पास जो वोल्टेज की स्विंग है या करंट की, आउटपुट करंट की जो स्विंग है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपने ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उस लोकेशन पे इसको सेट किया है कि द मैक्सिमम स्विंग इज पॉसिबल, देन यू कैन अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट इज 50%। लेकिन अगर आप इसको इस पॉइंट पे बायस करते हैं इस ट्रांजिस्टर को, तो जहाँ पे मैक्सिमम स्विंग पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे या लेट्स से यहाँ पे, तो you cannot have the maximum frequency maximum efficiency of this type of amplifier circuit, which is transformer coupled class A amplifier. Now since we are dealing with the AC signal, so AC load line भी हम plot करेंगे। To carry out AC analysis, it is necessary to calculate the AC load resistance seen looking into primary side of the transformer. That means हमने primary side पे ये जो load resistance कितनी reflect back हो रही है हमने ये calculate करनी है। That means we have to calculate RL prime, then draw the AC load line on the collector characteristics. उसके बाद फिर हम AC लोड लाइन प्लॉट करेंगे इन कलेक्टर या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पे। तो RL prime, as we have discussed in previous slide, we can calculate RL prime, which is the load resistance seen at primary side of transformer. We can calculate it with this equation, which is RL prime equal to A square into RL. So A square is the transformer turn ratio square. The graphical analysis technique then proceed as follows, that is the draw the AC load line so that it passes through the operating point. Operating point means DCQ point जो हमने ये determine किया था।
and has a slope equal to -1 by RL prime, that is the reflected load resistance. मीन्स आप अगर आर एल प्राइम फाइंड करें और उसके बाद एक एसी लोड लाइन जो इस क्यू पॉइंट से पास करेगी और उसकी स्लोप होगी -1 बाय आर एल. तो if you draw that line with that slope and which passes through this Q point, that will be our AC load line. Notice that the AC load line shows that the output swing, signal swing can exceed the value of VCC. If you want to see, अब आपके पास VCC की वैल्यू ये थी जहाँ से आपने DC लोड लाइन ड्रॉ की थी, लेकिन AC लोड लाइन क्या सजेस्ट कर रही है कि आपके पास जो आपके पास जो आउटपुट की स्विंग है दैट कैन एक्सीड द वैल्यू ऑफ VCC. लाइक हियर कि आपके पास जो VCC है उससे आउटपुट स्विंग ज़्यादा हो सकती है. In fact, the voltage developed across the transformer primary can be quite large. It is therefore necessary to check the possible voltage swing that does not exceed the transformer maximum rating. So we need to have a check on the voltage appearing on primary side of the transformer so that it doesn't exceed the transformer maximum ratings. Now the signal swing and the AC output power. Figure 12.9, which is this one, shows the voltage and current signal swing from the circuit of figure 12.6, which is this one. So VCE peak to peak will be equal to VCE max minus VCE min. So ये generally जो हम peak to peak value find करते हैं किसी भी signal का, तो हम maximum में से minimum value minus करते हैं, you get the peak to peak value. Similarly, if you want to find the value of IC peak to peak, that will be equal to IC max minus IC min. That means कि मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू आईसी की माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें, you will get IC peak to peak. And the AC power developed across transformer primary can then be calculated using this relation, which is P naught AC equal to VCE max minus VCE min, that is आप peak to peak value find कर रहे हैं, into IC max minus IC min. Again IC की peak to peak value find कर रहे हैं, so P is equal to VI divided by 8. So this relation is the relation of AC power developed across transformer primary. For an ideal transformer, the power delivered by the secondary to the load is approximately calculated by equation 12.13. तो secondary पे भी for the case of ideal transformer where we consider that no power losses occur in between the process of transferring voltage from primary to secondary, तो इस केस में आपके पास ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं to calculate the power delivered to the load. The output AC power can also be determined using the voltage delivered to the load. वो कैसे? For the ideal transformer, the voltage delivered to the load can be calculated using this equation, which is VL equal to V2 equal to N2 by N1 into V1. ये इक्वेशन 12.9 हमने पहले डिस्कस की थी. And the power across the load can be expressed as वोल्टेज की फॉर्म में जब आप पावर को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज V स्क्वायर बाय R और V की RMS वैल्यू कंसिडर करते हैं. So VL square RMS divided by RL will be the power delivered to the load. एंड करंट की फॉर्म में आपके पास ये रिलेशन है IL इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू N1 बाई N2 इंटू IC. IC एक्चुअली I1 है.
तो इस करंट की फॉर्म में आपके पास जो पावर डिलीवर टू द लोड की इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू दैट इज पी एल इक्वल टू आई एल स्क्वेयर आर एम एस इंटू आर एल। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल 12.4। इट सेज calculate the AC power delivered to 8 ohm speaker for the circuit of figure 12.10. The figure is given here. The circuit component values result in a DC based current of 6 milliampere, means IB की value given है 6 milliampere, and the input voltage that is VI result in a peak base current swing of 4 milliampere, और IB की जो peak swing है वो भी given है, that is 4 milliampere की swing है। तो इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द एसी पावर डिलीवर्ड टू 8 ओम स्पीकर। तो सबसे पहले आप इसका डीसी एनालिसिस करते हैं और क्यू पॉइंट फाइंड करते हैं। सो फॉर दिस केस द डीसी लोड लाइन इज ड्रॉन वर्टिकली, सी फिगर 12.11 from the voltage point, that is VCE Q equal to VCC, that is equal to 10 volt। तो ये हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपके पास जो आर सी है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कॉइल्स हैं ट्रांसफार्मर की, एंड वी कंसिडर देयर रेजिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो इन द केस ऑफ आइडियली, इन द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आपके पास ये जो वी सी क्यू पॉइंट है दैट इज इक्वल टू वी सी सी। So we can draw a straight line to draw this DC load line. Straight line from the point of VCE equal to VCC. So since we have IB equal to 6 milliampere that is given in this example, and the operating point we can find it as VCE is equal to 10 volt and ICQ equal to 140 milliampere. So 6 milliampere IBQ की वैल्यू गिवन है, this is actually IBQ। so the straight line which is DC load line जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो आपके पास Q पॉइंट है, इंटरसेक्ट जिस IBQ की कर्व को जिस पॉइंट पे करती है, तो वहाँ से आप ICQ और VCQ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। So VCQ तो we already know is actually equal to VCC, that is equal to 10 volt, और ICQ की वैल्यू आप इस ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, that is equal to 140। ये पॉइंट है 140 मिली एम्पेयर। So the effective AC resistance seen at primary, so that means we are now calculating the RL prime, जो ये RL इस प्राइमरी साइड पे रिफ्लेक्ट हो रही है। Transformer turn ratio that is also given, which is 3 square into RL, 3 square into RL, that will give you 72 ohm। So RL prime is equal to 72 ohm। The AC load line can then be drawn of the slope of -1 by 72, that is -1 by RL prime, going through the indicated operating point, that is here. To help draw the load line, consider the following procedure for a current swing of this IC, which is equal to VCE over RL prime, that is equal to 10 volt divided by 72 ohm equal to 139 milliampere। तो जनरली आपको अगर याद हो तो हम इस साइड पे जो कि IC एक्सेस है या VCE ज़ीरो वाला एक्सेस है उस पे हम पॉइंट फाइंड करते होते थे VCC बाय RC से। Here RC is now RL prime and VCC equal to VCE which is 10 volt। तो इस एक्सेस पे, यहाँ पे इस एक्सेस पे अगर हम एक पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास आ जाता है 139, उसकी प्लस 140 होगा,
क्योंकि ICQ plus 139, that will be on this point on IC axis. So we have calculated IC, which is VCE by RL prime. This is imaginary point. This is equal to 139. So we can mark a point A, which is ICQ plus this calculated IC, that is equal to 140 milliampere, जो कि आपके पास ICQ है, plus this 139 milliampere. So 279 milliampere, इस वैल्यू पे आपके पास ये पॉइंट बन रहा है 239 मिली एम्पेयर on the y-axis. So if you connect this point A through point Q, then you will obtain a you will obtain an AC load line. For the given base current swing of 4 milliampere peak, the maximum and minimum collector current and collector emitter voltage obtained from 12 point figure 12.11 are respectively given by these equation. तो हम पहले AC लोड लाइन ड्रॉ करते हैं. इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो कि इस Q पॉइंट से पास करे एंड एक्सटेंड इट टू दिस VCE एक्सेस. दिस विल बी योर AC लोड लाइन. अब इस पॉइंट पे अगर आप इस AC लोड लाइन पे नोट करें दिस 4 मिली एम्पेयर स्विंग, 4 milliampere in base current. So 4 milliampere in change in positive direction or upward direction. So 4 plus 6 plus 4 equal to 10. So it means you have this point for the base current swing, and for the other side bottom side पे 6 में 4 milliampere की swing आप add करें नेगेटिव साइड पे, that will be 2. So एक पॉइंट आपके पास ये बनता है, एक पॉइंट ये. इससे आप फाइंड कर सकते हैं IC मैक्स की वैल्यू एंड IC मिन की वैल्यू, और सिमिलरली कोरिस्पोंडिंग VCE min and VCE max you can calculate it through this graphical approach. तो VCE min की वैल्यू आती है 1.7 वोल्ट एंड VCE max है 18.3. VCE min की वैल्यू 1.7 वोल्ट है and VCE max is equal to 18.3 volt. Similarly, IC max is 255 milliampere. We found it through this graph, and IC min is equal to 25 milliampere. Now we have maximum and minimum values of IC and VCE. We can calculate output AC power, which is P naught AC, which is the AC power delivered to the load, is equal to VCE max minus VCE min into IC max minus IC min divided by 8. So this will be equal to 0.477 watts. So AC power delivered to this 8 ohm speaker is equal to 0.477 watts. Now the input DC power obtained from supply is calculated from the supply DC voltage, and the average power drawn from the supply is given by this equation, which is 12.14. It says PIDC, input DC power, is equal to VCC into ICQ. क्यों? क्योंकि आपके पास ये ICQ, you have to maintain this even if there is no signal and you are applying the voltage which is VCC all the time. So the power delivered power actually delivered by this DC source is this one, which is VCC into ICQ. For the transformer coupled amplifier, the power dissipated by the transformer is small due to small DC resistors of coil and will be ignored in the present calculation. Means amplifier की जो power dissipation है
वो you can ignore this because resistance is almost zero, because we are using the primary coil as RC. Thus the only power loss considered here is the dissipated by the power transistor, and it can be calculated using this equation, which is PQ equal to PIDC minus P naught AC. मीन्स आउटपुट पावर को हम इनपुट पावर से सब्ट्रैक्ट करें, दैट विल बी द पावर डिसिपेटेड बाय द पावर ट्रांजिस्टर, एंड पी क्यू इज द पावर डिसिपेटेड एज हीट. तो ये जो ट्रांजिस्टर पावर डिसिपेट करेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. When input signal is very small with very little AC power delivered to the load, the maximum power is dissipated by the transistor. When the input signal is larger and power delivered to the load is larger, less power is dissipated by the transistor. Example 12.5 for the circuit of figure 12.10, which is this one, uh, and results of example 12.4. Calculate the DC input power, power dissipated by the transistor, and efficiency of circuit for the input signal of example 12.4, previous example की. तो 12.4 से हमें we can find PIDC equal to VCC into ICQ, that is VCC is 12 volt, ICQ is 140 milliampere, so PIDC is equal to 1.4 watts, and PQ we can calculate is with this equation, that is equal to PIDC minus P naught AC. PIDC is 1.4 watt and P naught AC is 0.477 watts. So PQ is equal to 0.92 watts. And the efficiency of amplifier is given by this equation, which is percentage efficiency equal to P naught AC over P naught DC into 100%. So that is equal to 0.477 watt over 1.4 watt into 100%. This will be equal to 34.1%. Of course, this is greater than the series fed class A amplifiers. Now, the efficiency, the maximum theoretical efficiency for class A transformer coupled amplifier, the maximum theoretical efficiency goes up to 50%. Based on the signal obtained using the amplifier, the efficiency can be expressed as percentage efficiency is equal to 50 into VCE max minus VCE min over VCE max plus VCE min whole square percent. So आप percentage efficiency इस relation से भी find कर सकते हैं. It means larger the value of VCE max and the smaller the value of VCE min, the closer the efficiency approaches to theoretical limit of 50%. ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपके पास अगर ये सिग्नल मैक्सिमम है, मीन्स के लार्जर द वैल्यू ऑफ VCE max and the smaller the value of VCE min, the closer will be the efficiency to 50%. Now, this example says that calculate the efficiency of a uh, transformer coupled class A amplifier for a supply of 12 volt and outputs of VP equal to 12 volt, VP equal to 6 volt, and VP means the peak value voltage की given है, that is equal to 2 volt. So इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन है, since VCEQ equal to VCC that is equal to 12 volt, the maximum and minimum of the voltage swing are respectively VCE max equal to VCEQ plus VP. So VCEQ is 12 volt and VP for the part A is given as 12 volt.
So that is equal to 24 volt. VC max की value given है 24 volt, and VC min should be equal to 0 volt, because VCEQ minus VP equal to 12 minus 12, that is equal to 0. So इस केस में अगर आप efficiency calculate करना चाहें through this equation of 12.16, this will be percentage efficiency equal to 50 into VCE max minus VCE min over VCE max plus VCE min percentage. So this will be equal to 50%. So you can achieve maximum efficiency of 50% if the value of peak voltage or the peak voltage swing is equal to the voltage of DC source, that is VCC. सो अगर पार्ट बी में उसको हाफ कर दिया, दैट इज अब पीक वैल्यू ऑफ वी पी इज 6 वोल्ट, सो वी सी मैक्स इज नाउ 18 वोल्ट एंड वी सी ई मिन इज नाउ 6 वोल्ट. So percentage efficiency calculated by this equation will be 12.5%. So it has decreased dramatically. And part C where VP is 2 volt means VCE max अब 14 वोल्ट है और VCE min अब 10 वोल्ट है, तो आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी है 1.39%. Notice how dramatically the amplifier efficiency dropped from a maximum of 50% for VP equal to VCC to slightly over 1% of VP equal to 2 volt. So this is the end of this lecture where we have discussed the transformer coupled class A amplifier. I hope you understood this. Thank you very much.